let's start with you know, the illustration and the module part of FR of IND AS 109. So now we will start. So first, A Limited makes sale of goods to customers on credit for 45 days. The customers are entitled to earn a cash discount of 2% per annum if payment is made before 45 days, and an interest of 10% per premium is charged for any payments made after 45 days. मतलब अगर 45 डेज के पहले पेमेंट कर दिया तो 2% पर एनम होगा, और अगर उसके बाद किया तो फिर 10% पर एनम के लिए इंटरेस्ट चार्ज होगा. सो इवेल्युएट वेदर सच ट्रेड रिसीवेबल्स आर फाइनेंशियल असेट और नॉट. तो अब फाइनेंशियल असेट की अपन डेफिनेशन देखते हैं. तो फाइनेंशियल असेट की डेफिनेशन में क्या था अपने पास? तो financial asset means cash and bank balance. Second, equity shares of other instruments. Contractual right to receive cash for other financial asset. Contractual right to receive other cash. Contractual right to receive cash or other financial assets. So a financial asset is an asset where the contractual right to receive cash or another financial asset from another entity is there. In the above case, Limited has contractual right to receive cash or bank from its trade receivables recorded in its book of accounts after the expiry of credit days or earlier. Therefore, it is a financial asset. तो सिंपल है, फाइनेंशियल असेट है. क्यों है? बिकॉज एक कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है टू रिसीव कैश और अदर फाइनेंशियल असेट. नाउ second, Z Limited, the company makes sale of goods to customers on credit. Goods are carried in large containers for delivery to dealers' destinations. All dealers are required to deposit a fixed amount of rupees 10,000 as security for the containers. 10,000 security देनी है, which is returned only when the contract with company terminates. The deposits carry 8% per annum, which is payable only when the contract terminates. If the containers are returned by the dealers in broken condition or any damage caused, then appropriate adjustment shall be made. A financial asset क्या है? कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश और अदर फाइनेंशियल असेट. अपने जो 5 पॉइंट पड़े उसमें से ये कैश और अदर फाइनेंशियल असेट वाला. इन द अबव केस सच सिक्योरिटी डिपॉजिट्स आर रिसीवेबल इन कैश और बैंक एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड बिटवीन द डीलर एंड द कंपनी. हेंस दे मीट द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स. मतलब वो फाइनेंशियल असेट्स है. नाउ परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स. ए लिमिटेड इश्यूज बॉन्ड एट प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ CU 1000 पर बॉन्ड. 1000 रुपए का बॉन्ड इश्यू करता है. The terms of bond require annual payments in perpetuity at a stated interest rate of 8% applied to the principal amount of CU 1000, assuming 8% to be the market rate of interest for the instrument when it was issued. The issuer assumes a contractual obligation to make a stream of future interest payments having a fair value of CU 1000 on initial recognition. Evaluate the financial instrument in the hands of both the holder and the issuer. अब financial issue क्या है? Whether there is a contractual right to receive cash or other financial asset. For the holder, जो bond hold कर रहा है, there is a right to receive cash in future. Hence, it will be classified as a financial asset. For the issuer, there is a contractual obligation to pay cash in future. मतलब at the end of the period उसको cash pay करना है, हर एक interval पे cash pay करना है. So hence it will be classified as a liability. मतलब जिसको मिलने वाला जो holder है, bond का holder है, तो उसको हर महीने पेमेंट मिलने वाला है, तो उसको लिए एक फाइनेंशियल असेट है. कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू रिसीव कैश और एनी अदर फाइनेंशियल असेट. और जो पेमेंट करने वाला है जो कंपनी है, तो उसके लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी के तौर पे वो क्लासिफाई हो जाएगा. परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स. नाउ वी मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन. ए लिमिटेड मेक्स परचेज ऑफ स्टील फॉर इट्स कंजम्पशन इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. द परचेज टर्म प्रोवाइड्स फॉर पेमेंट ऑफ गुड्स एट 30 days credit and interest payable at the rate 12% per annum for any delays beyond the credit period. A limited makes purchase of stable. मतलब अपन को पे करना है. So analyze whether the transaction leads to financial instruments, and if yes, then what is the nature of the financial instrument. So financial liability में एक point है contractual obligation to pay, where there is a contractual obligation to deliver cash or other financial instrument to another entity. In the above case, a limited has entered into a contractual arrangement for purchase of goods at a fixed consideration payable to the creditor. A contractual that provides for payment and fixed amount of consideration meets the definition of financial liability. That is why it is a financial liability. That is why this is a financial liability. Now we move forward. ये थोड़ा रहने देते हैं, फिफ्थ वाला बाद में करेंगे थोड़ा. नाउ सिक्स, Silver Limited issued irredeemable preference shares with face value of rupees 10 each and premium of rupees 90. This shares carried 8% per annum. Irredeemable preference shares है, अपन ने कल डिस्कस किया था. Irredeemable preference shares अगर होता है तो वो हमारा इक्विटी पोर्शन है. However, dividend is paid only when Silver Limited declares dividend on equity shares. Analyze the nature of this instrument. तो इसमें वही लिखा है कि अगर अपना जो प्रेफरेंस शेयर है वो मीट द डेफिनेशन ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, और जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, डिविडेंड इज पेबल ओनली इफ कंपनी डिक्लेयर्स डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स. Since dividend on equity shares is discretionary and the company can choose not to pay,
कंपनी हैज एन अनकंडीशनल राइट टू अवॉइड पेमेंट ऑफ कैश और प्रेफरेंस शेयर ऑल्सो, मतलब जब तक कंपनी डिक्लेयर नहीं करेगी तब तक वो इक्विटी में आएगा, जिस दिन कंपनी डिक्लेयर करेगी उस दिन अपना फाइनेंशियल लायबिलिटी में चला जाएगा, वो रिक्लासिफाई हो जाएगा। नाउ द सेवन, नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी सेटल्ड इन ओन इक्विटी शेयर्स, ठीक है, वो तो अपने अपने लिए कुछ नहीं है। ए लिमिटेड इन्वेस्ट इन कंपल्सरली कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस सीसीपीएस इशूड बाय सब्सिडियरी बी लिमिटेड, बी लिमिटेड उसकी सब्सिडरी है, उसके लिए वो कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस इशू करता है एट ₹1000 ईच ऑफ ₹10 फेस वैल्यू एंड in which there is a 990 rupees of premium. Under the terms of the instrument, under the term, each CCPS is compulsorily convertible into one equity shares of B Limited at the end of 5 years. मतलब रेशियो फिक्स हो गया, रेशियो फिक्स हो गया, कल किया था रेशियो फिक्स, अगर फिक्स है तो वो अपने लिए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। Such CCPS carries a dividend at the rate 12% per premium, payable only when declared at the discretion of B Limited. Evaluate this under definition of financial instrument. B Limited has issued CCPS which provides for conversion into, हम इसके यहाँ पे बी लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो कन्वर्जन इनटू फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, दैट इज वन इक्विटी शेयर्स फॉर एवरी सीसीपीएस, नॉन क्यूमुलेटिव डिविडेंड्स है, दो चीज है, hence it meets the definition of equity instrument and shall be classified as such in the books. There is a no fixed number of equity shares पे है, there is no contractual obligation to deliver cash or other financial asset, dividends are paid only when declared and hence at the discretion of the issuer, B limited, thereby resulting in no contractual obligation over B limited, मतलब वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में रहेगा, वहां पे अपने में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के तौर पे रहता रहेगा, जब जब डिक्लेयर होगा वो फाइनेंशियल लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हुआ बी लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अगर हम ए लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और अगर हम ए लिमिटेड की बात करें तो उसके लिए उसको इक्विटी शेयर्स मिलने वाले हैं, आफ्टर प्रेफरेंस शेयर के बदले इक्विटी शेयर्स मिलेंगे आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, सो इट विल बी अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू रिसीव कैश और अदर फाइनेंशियल असेट, तो वो अपने लिए फाइनेंशियल फाइनेंशियल असेट हो जाएगा। और जो डिविडेंड वाला पार्ट है, डिविडेंड वाला पार्ट वो भी उसमें ही आ जाएगा, राइट टू रिसीव, तो वो भी हमारे लिए फाइनेंशियल असेट के तौर पे आ जाएगा इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। बी लिमिटेड में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में रहेगा जो अपना फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है इसलिए, एंड डिविडेंड के लिए जब तक डिक्लेयर नहीं किया गया तब इक्विटी में रहेगा, जब तक डिक्लेयर नहीं किया तब कुछ नहीं, बट जब डिक्लेयर किया तब वो फाइनेंशियल लायबिलिटी में क्लासीफाई हो जाएगा। नाउ एथ वन, Target Limited took a borrowing from Z Limited for ₹10 lakh. Z Limited enters into an agreement with Target Limited for settlement of the loan against issue of certain number of equity shares of Target Limited, whose value equals ₹10 lakh. For this purpose, fair value per share to determine the total number of equity shares to be shall be determined based on the market price of the shares of Target at a future date upon settlement of the contract. Evaluate this under the financial instrument. मतलब इसमें क्या है कि लास्ट डे आपने क्या बोला, टारगेट लिमिटेड टू को बोरोइंग फ्रॉम जेड लिमिटेड फॉर ₹10 लाख, जेड लिमिटेड एन एग्रीमेंट विद फॉर सेटलमेंट ऑफ द लोन अगेंस्ट इश्यू ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ टारगेट लिमिटेड हुज वैल्यू इक्वल्स ₹10 लाख, जो जब उस दिन जितनी वैल्यू होगी उस दिन पे जो नंबर, उस दिन जो मार्केट वैल्यू चल रही होगी उसके बेसिस पे हम नंबर ऑफ शेयर्स इशू करेंगे, तो वो वेरिएबल पार्ट हो गया, वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स देने की बात हो गई। तो अगर वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स है तो वो हमारे लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी है इन द बुक्स ऑफ टारगेट लिमिटेड। And this was it. This was part one of, this was it. This was done. This is unit one.